देने के काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एका अतिशय महत्त्वाच्या चर्चेवर या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला मनापासून आभार मानतो। या चर्चेच्या सुरुवातीला सर्वप्रथम पहलगामचा जो दहशतवादी हल्ला जो झाला, या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये ज्या 26 निरपराध लोकांना जीव गमवावा लागला त्यांना या ठिकाणी मी सर्वप्रथम श्रद्धांजली अर्पण करतो। या ठिकाणी अनेक भाषणे मी या ठिकाणी ऐकले, परंतु कोणत्याच वक्त्याच्या भाषणामध्ये जो उल्लेख झाला नाही तो सुद्धा मला या निमित्ताने या ठिकाणी करावासा वाटतो, आणि तो म्हणजे पहलगाम येथील गाईड सय्यद आदिल हुसेन शाह यांनी पहलगाममध्ये आलेल्या टुरिस्ट लोकांना वाचवण्याकरता जे आपलं प्राणाची त्या ठिकाणी शहादत दिली त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी त्यांना वंदन करतो, नमन करतो। अतिशय यशस्वीपणे सिंदूर ऑपरेशन या ठिकाणी भारतीय सैन्याने पूर्ण केलं, त्याबद्दल भारतीय सैन्याचं या ठिकाणी सर्वप्रथम मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो, त्यांना नमन करतो, त्यांना वंदन करतो। आज अनेक लोकांचे भाषणे या ठिकाणी मी ऐकत होतो, आणि हे भाषण ऐकत असताना ज्या पद्धतीची चर्चा या सभागृहामध्ये होणं अपेक्षित आहे, इतका मोठा दहशतवादी हल्ला या देशावर झाला, 26 लोकांनी या हल्ल्यामध्ये जीव गमावला, आणि इतका मोठा दहशतवादी हल्ला या देशावर होत असताना या सदनामध्ये ज्या पद्धतीनं सिरियस चर्चा त्या निमित्तानं व्हायला अपेक्षित होती, आज दुर्दैवानं या चर्चेला सुद्धा कुठेतरी राजकीय रंग हा त्यानिमित्तानं येताना या ठिकाणी पाहायला भेटतोय, आणि याचं अतिशय भारतीय म्हणून मनापासून या गोष्टीचं दुःख त्या निमित्तानं आहे। या चर्चेला राजकीय रंग येणं अपेक्षित नव्हतं, परंतु या चर्चेला सुद्धा राजकीय रंग त्या निमित्तानं या ठिकाणी येताना आपल्याला पाहायला भेटतो। या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा नारा आहे, भारतीय जनता पक्ष सांगतो की राष्ट्र प्रथम, आणि ज्या वेळेला भारतीय जनता पक्ष सांगतो की राष्ट्र प्रथम त्यावेळेला खऱ्या अर्थानं राष्ट्राला प्राधान्य देण्याचं काम हे त्यानिमित्तानं भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे, ही एक अपेक्षा या निमित्तानं या चर्चेच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो। आणि चुका होत राहतात, सरकार तुमचं असो, सरकार आमचं असो, सरकार काँग्रेसचं असो, सरकार बीजेपीचं असो, चुका झाल्या त्या चुका स्वीकारण्याचं काम त्या निमित्तानं प्रत्येक सरकारने त्या निमित्तानं केलं। आज या ठिकाणी मी ऐकत होतो, या ठिकाणी ऐकत असताना 26/11च्या हल्ल्याच्या वेळेला काय परिस्थिती होती, त्यावेळेला तुमचं काय फेल्युअर होतं, हे या निमित्तानं भारतीय जनता पक्षाचे सन्मान्य सदस्य या ठिकाणी बोलताना बोलून घेत। परंतु मला या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं की या देशामध्ये पहिल्यांदा असं झालं की जिवंत दहशतवादी पकडण्याचं काम हे पहिल्यांदा 26/11च्या हमल्याच्या वेळेला झालं होतं, आणि अब्दुल अहमद कसाबला त्यावेळेला आपण जिवंत पकडलं, आणि पाकिस्तानचे दहशतवादासोबतचे कनेक्शन काय आहे हे त्या माध्यमातून कसाबच्या माध्यमातून आपण संपूर्ण विश्वासमोर त्यानिमित्तानं आणलं होतं। माझी अपेक्षा इतकीच राहील, चुका तुमच्याकडनं हो, चुका आमच्याकडनं हो, त्या चुका आपण सुधारवल्या पाहिजे, परंतु जी बाब सत्य आहे ती स्वतः स्वीकारण्याचं काम त्या निमित्तानं प्रत्येक सरकारने केलं पाहिजे, अशी एक अपेक्षा मी आज या चर्चेच्या निमित्ताने ठिकाणी करतो। आज या चर्चेच्या निमित्तानं अनेक लोकांनी आपले भावना या ठिकाणी प्रगट केल्या, अनेक लोकांनी आपलं मत या ठिकाणी मांडले, परंतु मला या निमित्तानं काही प्रश्न या निमित्तानं या चर्चेच्या माध्यमातून माननीय या देशाचे सन्माननीय पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांना सुद्धा विचारायचं। हा इतका मोठा हल्ला आपल्या देशावर झाला, 26 लोक या हल्ल्यामध्ये त्या निमित्ताने शहीद झाले, परंतु जे 5 आतंकवादी जे या हल्ल्यामध्ये सहभागी होते, या 5 आतंकवादींचं आता जवळपास 3 महिने पूर्ण झाले या हल्ल्याला, 3 महिन्यानंतर सुद्धा हे 5 आतंकवादी अजूनपर्यंत आपल्याला भेटले नाही, हे आपल्या सरकारचं सर्वात मोठं अपयश आहे, हे सुद्धा त्या निमित्तानं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। इंटेलिजन्सचा काय फेल्युअर आहे,
या संदर्भामध्ये सुद्धा विचार त्या निमित्तानं आपण केला पाहिजे. ज्या वेळेला कारगिलचं युद्ध झालं होतं, कारगिलचं युद्ध ज्या वेळेला झालं होतं त्यावेळेला जम्मू काश्मीरमध्ये गुजर आणि बाकरवाल कम्युनिटी आहे. ही गुजर आणि बाकरवाल कम्युनिटीचा अतिशय महत्त्वाचा रोल हा यावेळेला आपल्याला कारगिलच्या युद्धामध्ये विजय मिळवून देण्याकरता राहिला होता. कारण की जी घुसखोरी, जे इन्फिल्ट्रेशन त्यावेळेला कारगिलच्या युद्धाच्या वेळेला पाकिस्तानच्या माध्यमातून होत होतं, त्यावेळेला भारतीय सैन्याला प्रॉपर माहिती देण्याचं काम हे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गुज्जर आणि बाकरवाल समाजाच्या लोकांनी केलं होतं. हा इतिहास त्या निमित्तानं आपण तपासून घेतला पाहिजे. मला या निमित्तानं भारतीय जनता पक्षाला विचारावंसं वाटतं, भारतीय सरकारला विचारावंसं वाटतं की जी माहिती कारगिलच्या युद्धाच्या वेळेला गुजर आणि बाकरवाल कम्युनिटीने आपल्या फोर्सेसला दिली, ती माहिती त्यांनी यावेळेला आपल्याला दिली होती की नाही याचं सुद्धा उत्तर त्या निमित्तानं आपल्या रिप्लायमधून येणं अपेक्षित आहे. आणि जर ही माहिती त्यांनी दिली नाही तर आपण त्यांना कुठं दुखावलं आहे का हा सुद्धा विचार त्या निमित्तानं आपण केला पाहिजे. जी माहिती आपल्याला कारगिलच्या युद्धाच्या वेळेला त्यांच्याकडे मिळू शकते ती माहिती आपल्याला या पहलगाम अटॅकच्या वेळेला का मिळाली नाही याचं उत्तर त्या निमित्तानं आपल्या उत्तरामध्ये त्या निमित्तानं मंत्री महोदयांनी द्यावं अशी एक अपेक्षा मी या ठिकाणी करतो. आज या परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपण बघतो, या परिस्थितीमध्ये आज मला तुलना करावीशी वाटते 1971च्या युद्धाची. 1971च्या जी काही परिस्थिती त्यावेळेला निर्माण झाली, इंदिराजी त्यावेळेला आपल्या देशाच्या पंतप्रधान होत्या आणि त्यावेळेला जवळपास 3 डिसेंबर 1971ला या ठिकाणी आपल्या जे वैमानिक तळ आहेत त्याच्यावर पाकिस्तानने अटॅक केला आणि त्या अटॅकला चोख उत्तर त्यावेळेला आपल्या देशाच्या पंतप्रधान इंदिराजींनी दिलं, भारताच्या सैन्याने दिलं. 13 दिवस युद्ध चाललं आणि 13 दिवस युद्ध चालल्यानंतर 13 दिवसामध्ये 94,000 पाकिस्तानी सैन्याला त्यावेळेला सरेंडर करावं लागलं. पाकिस्तानी सैन्याने सरेंडर केलं. त्या युद्धामध्ये आपण आपला विजय त्या निमित्तानं घोषित केला आणि 16 डिसेंबरला त्यावेळेला आपण बांगलादेशाची त्यावेळेला निर्मिती सुद्धा त्यावेळेला केली. मला या निमित्तानं इतकं सांगायचं वाटतं की ज्या वेळेला हे 1971चं युद्ध चालू होतं त्या 1971च्या युद्धाच्या वेळेला सुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या माध्यमातून हे युद्ध तात्काळ बंद करावं अशा पद्धतीच्या सूचना त्या निमित्तानं आल्या होत्या. तशा पद्धतीचं प्रेशर त्यांच्याकडनं आलं होतं. परंतु ते प्रेशरला, त्या दबावाला कुठेही न जुमानता इंदिराजींनी थोडं सुद्धा मागं पाऊल खटवलं नाही आणि युद्ध पूर्णत्वास नेलं आणि बांगलादेशची निर्मिती ही त्यावेळेला त्या युद्धाच्या माध्यमातून इंदिराजींनी करून दाखवली होती. त्यामुळे सांगायचं तात्पर्य फक्त इतकं आहे की आज आमच्या सन्माननीय मोदी साहेबांना, आमच्या देशाच्या पंतप्रधानांना आम्ही विश्वगुरू म्हणून संबोधतो आणि विश्वगुरू जेव्हा आम्ही आमच्या देशाच्या पंतप्रधानांना संबोधतो त्यावेळेला या देशातल्या नागरिकांच्या, देशातल्या लोकांच्या त्यांच्याकडनं काही अपेक्षा आहेत. त्यामुळं ही जी परिस्थिती पहलगाममध्ये निर्माण झाली याच्यावर सुद्धा या देशाच्या पंतप्रधानांना, या देशातले लोक, या देशातली सामान्य जनता काही प्रश्न त्या निमित्तानं विचारू इच्छिते. आज मला या निमित्तानं विचारावंसं वाटतं की आज विश्वगुरू म्हणून आपण मोदीजींना संबोधतो. 2014 पासून माननीय मोदी साहेबांचे जे परदेश दौरे झाले त्याच्यामध्ये 2014 पासून अमेरिकेला 9 व्हिजिट मोदीजींच्या 2014 ते 2025 या काळामध्ये झाल्या. चीनला त्यांच्या 5 व्हिजिट झाल्या, जपानला त्यांच्या 8 व्हिजिट झाल्या, नेपाळला 5 व्हिजिट झाल्या, ऑस्ट्रेलियाला 1 व्हिजिट झाली आणि युरोपियन कंट्रीमध्ये जवळपास 15 ते 20 व्हिजिट मागच्या 10 ते 11 वर्षामध्ये मोदीजींच्या झाल्या. त्यामुळे मला या निमित्तानं विचारावं वाटतं की आपली परराष्ट्र नीती कुठं फसली आहे, आपल्या परराष्ट्र नीतीचं काय फेल्युअर आहे याचं सुद्धा उत्तर या निमित्तानं आम्हाला मिळालं पाहिजे की ज्या अमेरिकेला तुम्ही 2014 पासून 9दा व्हिजिट करता त्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तानच्या आर्मी फोर्सच्या चीफला त्या ठिकाणी जेवणाकरता बोलवतात पहलगामच्या अटॅक नंतर. याच्यापेक्षा दुसरी शोकांतिका आणि याच्यापेक्षा दुसरी ठीक आहे, धन्यवाद बाप ही त्या निमित्तानं कुठली माननीय श्री चीन अध्यक्ष महोदय मैं अकेला वक्तव्य मेरे 14 मिनट पार्टी का है. 14 मिनट स्पीकर फ्रॉम पार्टी, आपके पार्टी से और एक स्पीकर भी है, वो जुमला मिला के 14 मिनट का समय आपको दिया गया. आप कंक्लूड कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप कंक्लूड कीजिए. अध्यक्ष महोदय मेरे पार्टी के 14 मिनट है.
नहीं, अगर आप कंक्लूड करेंगे चीनला अध्यक्ष महोदय, चीनला समय सन्माननीय already बता मोदी चुका साहेबांच्या है. 5 विजिट झाल्या आणि 5 विजिट झाल्यानंतर चीनचे जे परराष्ट्र मंत्री आहे ते सांगतात आहे का पाकिस्तान आणि आमचं चीनचं जे बॉन्डिंग आहे ते लोहे जैसा मजबूत बॉन्डिंग हमारा आहे. तर मला या निमित्तानं या ठिकाणी परराष्ट्र मंत्री आमचे आहेत त्यांना सुद्धा विचारायचं वाटतं की आपली परराष्ट्र नीती ही त्या निमित्तानं कुठं चुकली आहे याचं सुद्धा उत्तर हे त्या निमित्तानं आपल्याला त्या निमित्तानं भेटलं पाहिजे. आज IMF असेल, ADB असेल, वर्ल्ड बँक असेल यांच्या माध्यमातून जवळपास 44 अब्ज डॉलर्सचं मदत ही पाकिस्तानला पहलगाम अटॅकच्या नंतर त्या निमित्तानं झाली आहे. त्यामुळे माझी इतकी अपेक्षा राहील की हे जे सर्व आपले फेल्युअर्स आहे या फेल्युअरचं उत्तर सुद्धा त्या निमित्तानं सन्मान्य देशाच्या पंतप्रधानांनी त्या निमित्तानं दिलं धन्यवाद. पाहिजे अशी अपेक्षा मी धन्यवाद या जी. ठिकाणी करतो. धन्यवाद. आज या ठिकाणी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद. माननीय श्री बैजनाथ पांडा जी. Sir, हाँ बोलिए. as I rise to speak on this issue of the Pakistani sponsored terror attack रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सर, बता दीजिए. in Pahalgam आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है. and आप बैठिएगा. आप बैठिए. thereafter Operation Sindoor. Sir, this has seen both a new low by Pakistan, although it has a long history of sponsoring terrorism and is known as the epicenter, the global epicenter of terrorism. This is a new low because the terrorists, as has been widely spoken about, identified the victims by religion before killing them. This has also seen a new normal in India's response and a new milestone in teaching Pakistan a lesson. Sir, this saga has been going on for 78 years, from immediately after independence, when Pakistan has been sending terrorists across the border. Many efforts have been made over the decades. Many steps have been taken, including many conciliatory steps. Steps which have involved agreements on water, steps which have involved giving back land that has been captured, steps that have involved returning tens of thousands of prisoners of war. These steps have seen many different aspects. We have seen bus diplomacy. We have seen many different efforts. Prime Minister Narendra Modi, right from 2014, tried to reach out, tried to have an understanding with Pakistan to fight poverty together. Right from the beginning, he invited his counterpart, the Pakistani Prime Minister, for the oath-taking ceremony. He even walked into Lahore unannounced, unarmed, filled only with courage and with good intention. But that was repaid with more terror attacks on Indian soil, more Indian lives taken, with the sponsorship and the training of Pakistan. Sir, भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया. पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया. This is the reality of our experience with cross-border terrorism. We have responded, sir, and it is important to point out the new normal that is now in place. We responded first with the surgical strikes. They did not relent. The Pakistanis still kept sponsoring, training, financing, sending terrorists across. We then responded with the Balakot airstrikes. And the airstrikes are a message which have continued till today. No one who kills Indians will sleep peacefully. Not across the border, not even in the safety of their homes. They will be tracked down and they will be killed
inside their own homes. But this time in Pahalgam, this new law which was achieved required Operation Sindoor. So they attacked tourists and we attacked terrorists. We did not target Pakistan's civilians. Our response, Operation Sindoor, was precise, it was measured, and it targeted terrorist sites. And only when Pakistan escalated did we then hit back at many more sites. Sir, this is not a reaction. This is a doctrine. This is the Modi doctrine. This is the new normal which Pakistan has now understood. Let me say this clearly, sir, that the India of today is not the India of 2008. This is very important because this turnaround, this new normal, is because of our changed policies. Sir, we must give full credit to our armed forces. The Honorable Defense Minister has pointed out their bravery, their sacrifices for the nation, and during this conflict also, what is important is, one question was asked, what about China? I have several things to say about China, but let me point out, when the Honorable Defense Minister said that the Indian Air Force bypassed and jammed air defense systems of Pakistan in 22 minutes, those were Chinese-supplied air defense systems that were neutralized in just 22 minutes. Sir, what is not often talked about, one thing we must, of course, acknowledge is that the entire country stood united on Operation Sindoor. I'm glad that even some friends across the aisle, across the other benches today, reiterated that. But sometimes, some honorable members have not been beneath taking this issue into domestic politics. I will come into that. One of the aspects that did not get talked about is that in this operation, where 11 air bases of a nuclear-armed country was hit. This is perhaps a first. This is perhaps a first that the armed bases of a nuclear-armed country was hit by India, 11 of them, and it destroyed 20% of Pakistan's Air Force assets. This is something that is worth remembering. The 9 bases of terrorists, their camps, which were neutralized, involved those of the Jaish-e-Mohammed, those of the Lashkar-e-Taiba, those of the Hizbul Mujahideen, all proscribed terror organizations who have long targeted India with the support of Pakistan. They are Pakistani-based, they are Pakistani. Sir, we have talked about more than 100 terrorists being eliminated in Operation Sindoor's hit on Pakistan. It is also important to point out that at least 5 of them were very infamous names known around the world. Names like Mudassar Khadian Khan, senior operator of LET. This is the person who was given a guard of honor by the Pakistani military. Khalid alias Abu Akasha, another Lashkar-e-Taiba commander. Muhammad Yusuf Azhar, wanted in the IC-814 hijack terror attack. Hafiz Muhammad Jamil, brother-in-law of Maulana Masood Azhar, and Muhammad Hassan Khan, Jaish-e-Mohammed commander. These are very significant names. These are very significant achievements in eliminating these terrorists. On the other hand, Pakistan's attempt to retaliate failed. And it pains me that friends in the opposition who have questioned India, who have questioned the successes achieved by the Indian armed forces, haven't pointed out these failures of Pakistan, nor have they asked these questions of Pakistan. Sir, Pakistan attacked Jammu University. It attacked the UN field station in Kashmir. These were neutralized, as the Honorable Defense Minister pointed out, by the UAS Unmanned Aerial System Grid. India's actions were purely to counter terrorism and hit terrorists, decoupling the issue from any other disputes. Sir,
Sir, if we look at the new normal that I have been talking about, it is important to understand what the past was. In the past, on a regular basis, almost on a daily basis, Pakistani sponsored terrorists were attacking India and killing Indians. Sir, if I give you a short list of the previous terror attacks and our responses, you will understand, sir, and I hope all our friends will understand that the new normal indeed is very dramatically different. Sir, 2005, Delhi serial blasts. A dossier was sent to Pakistan. So 2006, Varanasi bombings. India raised the issue in Indo-Pak talks. Mumbai attacks, sir, 2008, when so many people were killed and the then government decided not to retaliate. What is most shameful is that retaliation was considered. Retaliation was planned by our armed forces, but the then government did not permit retaliation. It is on record that the then senior-most officials of the government, whether it was the Foreign Secretary, whether it was the then NSA, took a decision not to hit back at Pakistan. This is what is really shocking, sir. 2006, Mumbai terror bombings. Sir, it is also important to point out that after the Mumbai attacks, 7 months after that, the then Prime Minister met the Pakistani president on the sidelines of the SCO summit in Russia and decided that India and Pakistan would continue dialogue. So we kept appeasing them. Our governments of the day over decades kept appeasing them, putting no pressure on them to stop their terror funding, terror organizing. Sir, in 2006, 2 months after the Mumbai train bombings, the then Prime Minister met Pakistani President Musharraf on the sidelines of the NAM summit in Havana and again agreed to maintain the peace process. So that so-called peace process was no peace process at all. It was only peaceful for Pakistan. Indians in large numbers were sacrificed. India was attacked repeatedly and large numbers of Indians were harmed and killed. Sir, worst of all, in 2009, within 8 months of the Mumbai terror attack, the then Prime Minister met his Pakistani counterpart at Sharm el-Sheikh in Egypt and agreed to again continue the cooperation with Pakistan. This for a country that for 78 years has been attacking India ceaselessly. Our approach in the past was only to cooperate, only to talk, not to retaliate, not to teach them a lesson. Sir, the worst part of this at Sharm el-Sheikh was a reference to Balochistan, which can be interpreted as if India and Pakistan are equated, as if India does similar things to Pakistan, whereas the issues are entirely different. There are no terror camps in India training terrorists and sending them to Balochistan. There is no equation at all. There is no comparison at all. And yet, our government of the day had no compunction in granting such a hyphenation with Pakistan. Sir, this can go on and on. There are many, many different such examples, and I will come to some of them. Sir, one question has been raised as to whether there was pressure on India to conclude the hostilities. There was absolutely no pressure on India. This has been pointed out again and again. Sir, any country can call and make suggestions. Anybody can do that. We as members of parliament can call up our counterparts when they are in the midst of hostilities, and we can give them suggestions. That is not how the hostilities ended. Sir, India has pointed out very, very clearly that this is a bilateral issue, and we have no intention of escalating. We would stop hostilities if Pakistan requested. And until and unless Pakistan directly requested India, we did not stop the hostilities. It had no relation, no connection
to any requests by anybody else until Pakistan directly requested India. And sir, I ask my friends in the opposition, this has not been contradicted by anyone. Has anyone contradicted India's assertion that we insisted that it had to be a Pakistani request that we will respond to? And Pakistan finally came to its knees and requested, and that is what we responded to. Now, it is shameful that many in our country keep questioning the Indian armed forces, keep questioning the Indian government, and don't question what Pakistan stands for, what Pakistan says. Sir, I want to point out what Pakistan has said. They made absurd claims. Pakistan has made a claim to an international TV channel on 7th May. Pakistan's IB minister, Ataullah Tarar, said, there are no terrorist camps in Pakistan. Have any of our friends in the opposition questioned that? Many of them have been quoted repeatedly in international media. Have any of them questioned that? Pakistan, where the most infamous terrorist in memory, the Al-Qaeda chief, was sheltered next to an army base, claiming that it doesn't have terror camps, when terror camps have been pointed out in satellite imagery, when not only terror camps have been pointed out, because of the efforts of our government, many terrorist organizations and many individual terrorists have been proscribed by a variety of multilateral organizations, including the United Nations itself. Sir, I would like to point out that when the Honorable Congress member from Assam talked about certain things, I think it does deserve a response. I compliment him and others who said that they stand with the government of India, but the questions and the accusations against the government cannot go unanswered. Sir, it was amusing when he asked when POK would be got back. Sir, it was amusing when he referred to the number of Rafales and the China question. Sir, I would like to point out, and he used the point and he used the word that India bowed down. And his leader, whom he cited today in relation to the China question, has often used the word surrender. I think it is important for this House to point out how many times over the decades Congress has surrendered India's interest. Please have the patience to listen to this. 1948, Pakistan illegally occupied 78,000 square kilometers, the same POK that my friend was referring to. When our armed forces wanted just a little bit more time to conclude the armed operations and take it back, the then Prime Minister took the matter to the UN. Surrender. Number one, it started from day one. 1949, Congress ignored the Kabah Valley, which was leased to Burma by UK. Manipur had received rent until 1949. Congress did nothing about it, surrendered that. Surrender number two. Sir, in 1954, our then Prime Minister conceded India's rights in Tibet, accepting China's annexation without gain, withdrawing our military escorts and services. A very major surrender, number three. Sir, in 1958, under the Noon-Nehru Pact, Berubari was transferred to East Pakistan, despite severe opposition. Another surrender. So I lose count of the number of surrenders, but there are quite a lot. Please allow me to point out a few more. If I list all the surrenders that Congress did of India's national interest, then the 16 hours that the Honorable Speaker has granted us will not be enough. But I will point out a few more. Sir, in the 1950s, our then Prime Minister rejected the proposal for a UN permanent seat for India in the Security Council. Surrender to China. Surrender. 1960, India conceded the Sarja Majra, Rakh Hardit Singh, Pathan Ke, Suleiman Ke, and Chak Lereke in Punjab to Pakistan. Another surrender. Sir,
our then Prime Minister played down the valley of Aksai Chin in 1959, calling it barren and uninhabited, when in fact it is full of mineral resources, dismissing conflict with China. Another surrender. Sir, I can just go on and on and on. In 1963, Pakistan conceded more than 5,000 square kilometers in POK to China. India stayed silent. Surrender. So I can just keep going on. In 1965, India returned the Haji Pir Pass to Pakistan under the Tashkent Agreement. Surrender. Sir, under the 1971 Shimla Agreement, India returned 5,000 square miles to Pakistan, while Pakistan retained 30,000 square miles, and 93,000 Pakistani soldiers were released, while at the same time, 56 Indian soldiers died in Pakistani jails. There are so many other surrenders, sir. If I keep listing all the surrenders, then, as I said, the whole time will be taken up. Sir, I can tell you that there are many, many more surrenders that the Congress party did of Indian interest. And since the issue of China was raised, I think it is important to point out, isn't it the leader of the opposition who, on social media, is seen praising China's capabilities, China's drones? Has he once ever complimented the Indian armed forces and the Indian indigenous technologies? Has it happened? Sir, let me point out, others are pointing this out. Others are saying that India has done very well on this front. International experts are pointing this out. But our opposition members are refusing to take a stand on this. नहीं, मजा कैसे लगेगा? मजा कैसे लगेगा? क्योंकि ये बहुत कठिन बातें हैं. देखिए, ये तो मिर्ची है, कहाँ से अच्छा लगेगा? Yes, Kachatibu, Ran of Kutch, there are many others. Yes, there are many others if I start listing them. देखिए, मजा तो तब आता अगर आप भी फ्री हैंड देते हैं. आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं. मैं तो सुन रहा था मेरे मित्र मान्य शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं. ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मुझे लेकिन सुन तो लीजिए सर. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको देश के हित में बोलने के लिए कोई रोक नहीं सका. मजा तो उसमें आता है. Point to be noted. Sir, I would request my friends on the other side that before they raise issues about China, they must, and they talk about candor, they must speak with candor about any MOUs that they might have with the Chinese ruling party. Does the Indian public not have a right to know what is the understanding that the Congress party has with the Chinese Communist Party? Does it not raise questions when they keep raising points and rebuttals and issues which are constantly aimed against the Indian armed forces, which are constantly aimed against the government of India? But as I said, in so many appearances before global media, I have not seen them raise questions about China other than praising China's technology and drones. I have not seen them questioning Pakistan for all the absurd and false claims that it makes. Sir, I said earlier that globally experts are recognizing India's indigenous capacities. I just point out two experts, sir, and then I'll start coming to my conclusion.
Sir, John Spencer, who's the chair of Modern War Institute in the US, last year in 2024, he said, "Make in India has transformed the country's defense landscape. From meeting 32% of the Army's ammunition needs domestically in 2014, in 2024, India meets 88% of its ammunition needs domestically." Sir, another expert, Tom Cooper, who is a military historian and an aviation analyst, says this right after Operation Sindoor's attack on Pakistan. Quote, "The world knew about India's capability, but it had not been demonstrated before. And all of a sudden, within 24 hours, India showed that it can hit Pakistan hard." Unquote. Sir, the reality is, all the statistics that I have been citing about hitting Pakistani air bases, about hitting Pakistani terrorist sites, are all backed up. They are backed up by satellite imagery. They are backed up by recordings. Whereas the Pakistani claims against India are fake, they are fake news, they are propaganda, and sadly, some of our friends, while ostensibly standing with India, standing with the government, standing with the people of India on Operation Sindoor, have fallen into supporting that narrative of Pakistan. Unsubstantiated claims against India, which I think ultimately the objective of the Pakistan narrative is to demoralize our forces. It is certainly not to encourage them for all these successes that they have had. Sir, as I come to the close of my speech, I would like to point out a few other things. One of the allegations that some friends in the opposition keep making is that our position is not supported around the world, that India doesn't have friends, that India has not made its message clear. Now, nothing could be further from the truth, sir. Let me point this out. Sir, post-Pahalgam, post-Operation Sindoor, India has received 61 messages from heads of state, heads of government, and vice presidents. India has received 35 messages from foreign ministers. These are all in support. India has received 38 messages from members of various parliaments and former heads of state and government, leaders of opposition from various countries, and 43 messages from heads of various diplomatic missions. I would like to cite just a few of them, sir. The United States has made it very clear India has a sovereign right to combat terrorism. This is all post-Operation Sindoor. France, quote, "unwavering solidarity and stands firmly with India." Sir, Armenia, "terrorism cannot be condoned and must be condemned. Countries have the right to defend themselves against terrorism." Russia, "this brutal crime has no justification whatsoever, and its perpetrators will face a deserved punishment." United Kingdom, "India has every right to be outraged by the Pahalgam killings." Saudi Arabia strongly denounced the terrorist attacks in Pahalgam, reaffirmed firm stance against terrorism and extremism. Sir, I can go on and on. I think one of my friends in the opposition mentioned that Iran, from whom we buy certain petro products, has not condemned it. So that's not true. Iran too the president of Iran directly called up our Prime Minister Modi ji and conveyed in the strongest words the support to India. Sir, multilateral agencies like BRICS and Quad and even the FATF have all condemned the Pahalgam attack. Nobody has condemned India's right to defend itself. Nobody has opposed it. That used to be the case in the past. Nobody has said India should not be defending itself and in implementing the decisions taken by the CCS. Sir, the proof of the pudding remains in the final information that come out. Even as we were debating this issue today, some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears
that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. Now, one of the important developments that has taken place, sir, is that for 2 years now, India has been giving detailed information to the UN, to US and other countries about this outfit called the TRF, the Resistance Front. The TRF is a front organization of the Lashkar-e-Taiba, LET. Sir, as terrorist organizations get proscribed and have limitations, don't have as much freedom to move money and have training camps, they come up with all these new names and new structures. Sir, I think our friends who for several weeks now have been going around saying that India has not been succeeding in taking its message around the world should acknowledge just a few days ago, the United States has proscribed the TRF as a terrorist organization, as a global terrorist threat. Sir, India has been succeeding. It is not enough to just stand with the people of India. Of course, you must stand with the people of India because otherwise you get completely sidelined. It is also important to celebrate India's successes. It is also important to boost the morale of our armed forces, to boost the morale of our scientists and technologists who have developed these indigenous equipment and indigenous armaments. Point out two things. Was called सरदार उधम. लाइन था कि दूर होता है. सर, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर वो जवाब था जिसमें दर्द भी था और संदेश भी. Sir, as I close, I would like to point out the following. Those who are still wanting to test Bharat's will, the willpower of the Indian government and the Indian people, will be in a very sorry situation. Sir, in concluding, I must also point out that when we sent out delegations, 7 delegations went out to different countries. I was part of one of them. And the experiences that we had was very clear. All these nations unequivocally understood and supported India's stance. All these nations reiterated India had a right to self-defense and to hit back against terror. Every one of them condemned the Pahalgam terror attack. And sir, I would like to make one point here. Sir, many of these countries have given their highest honors to Prime Minister Modi. I believe of the countries that we visited, more than 11 have given their highest honors. Sir, what is important is that these are not just personal honors for our Prime Minister. Of course, we are all personally proud that the Prime Minister of India has been given the highest civilian and military honors in so many different countries. We went to 4 countries in my group, to Saudi Arabia, to Kuwait, to Bahrain, to Algeria. 3 out of those 4 countries have given their highest honors. Sir, it is important for the nation. It is not just a personal recognition. It is important for the nation. We experienced, our group experienced, when we went, the impact that this has had, the impact of India's foreign policy of the Modi government has had on all these nations, and we perceived that strength and that support. In conclusion, sir, those who are still wanting to test India's will, let them know we are a people of peace, but we are not prisoners of it. Let them know we don't seek conflict, but we will not fear it. Let them know we never start fights, but we never lose them either. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी. पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान की फौज को नमन करना चाहूँगा. देश की फौज के पराक्रम को कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगा. देश की फौज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये फौज, ऐसी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज अगर कहीं की है तो भारतवर्ष की, देश की फौज है, जिसने हमेशा तिरंगे को ऊपर
रखने का कार्य किया। और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है। इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय। और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। यह हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया। और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे। अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी, और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय यह रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं। मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में हमेशा ये बात पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया ये कहने के लिए। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना,
विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधित्व मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का, और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को IMF ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने ADB ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में UPA सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। आपकी विदेश नीति में कमी, दूसरी कमी वहां है जब दुनिया के मुल्कों ने, अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तोल दिया। ये कैसे संभव है? हम इसको कैसे मान सकते हैं? एक मुल्क आतंकवाद को पोषित करने वाला मुल्क है और दूसरा मुल्क आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है। हम अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा बार बार सभी मुल्कों ने बराबर तोल दिया। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता अमेरिका को लेकर है। यह वही अमेरिका है, हमारे इतिहास में समय समय पर अमेरिका को जब आंख दिखाने की बात आई तो हमने आंख भी दिखाई, और जब हाथ मिलाने की और मधुर संबंधों की बात आई तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका से संबंधों में सुधार भी हुआ। हमने उतार चढ़ाव अमेरिका से संबंधों में देखा है। 1971 में जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज मत भेजिए, तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज गई थी। आंख दिखाई हमने। परमाणु परीक्षण की जब बात आई तो चाहे इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, चाहे अटल जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, अमेरिका ने जब रोकने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ने आंख दिखाई और अमेरिका के दबाव को नहीं माना। ये वही अमेरिका है। लेकिन जब अमेरिका से हाथ मिलाने की बात आई, सपोर्ट की बात कर रहे थे, सपोर्ट का लेटर्स पढ़ रहे थे जय पांडा भी मौजूद थे जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे। जब मित्रता की बात आई और 26/11 हुआ मुंबई में, तो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन से दिल्ली आए। जॉइंट संसदीय सेशन में मैं भी एक सांसद था, जय पांडा भी एक सांसद थे, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के सेफ हेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान ये साथ देने निभाने की बात, हाथ भी मिलाया और नजर भी, आंख भी मिलाई। मगर अमेरिका, आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने 28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा, व्यापार के धौंस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके,
उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। और दुख की बात ये, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी एक और, आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी। चीन को लेकर बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने